हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। मैं एडमिट करती हूँ कि जब रात आती है और मैं सोने की कोशिश करती हूँ और मुझे कोई आवाज सुनाई देती है, मैं बहुत डर जाती हूँ। मगर ये आवाजें जॉनी नहीं होती है। एक एसी की आवाज हो सकती है या कोई कर्टन की आवाज या कोई बिल्ली की। ये जॉनी नहीं है मगर रात के अंधेरे में बन जाती है। But some sounds actually are scary whether you hear them in the dead of night or in broad daylight. Some sounds can just get under your skin like nothing else can. So let's find out what these sounds are, shall we? वीडियो शुरू होने से पहले guys, please वीडियो को एक thumbs up दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हम हर 3 दिन अपलोड करते हैं और अगर आपको कंटेंट सबसे पहले देखना है तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दो अगर आप चाहो। But anyway, this is the top 10 scariest sounds ever recorded. 10 पे है nuclear alarm sirens और ये आवाज इंशाल्लाह मैं कभी नहीं सुनूंगी, मगर जब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका शामिल है तो क्या पता क्या हो सकता है। ये अलार्म ढेर सारे मुल्कों के पास है और वो बजता है जब एक न्यूक्लियर अटैक होने वाली है 2-3 मिनट के बाद। I'm not really sure what the point is in warning us that in advance, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक है तो आधे घंटे पहले भी अलार्म बज जाए हम फिर भी सारे मरेंगे। अगर आपने द पर्ज फिल्म देखी है तो ये अलार्म बिल्कुल उस अलार्म जैसे लगता है। May God be with you all. And let's face it, the purge alarm goes off before a lot of death happens, and so with the nuclear alarm siren. एक जैसे हैं। Coming in at number 9 is the Art Bell Caller. अगर आपने आर्ट बेल के बारे में नहीं सुना, वो एक मशहूर रेडियो टॉक शो होस्ट था और 1997 में उसको एक कॉल मिली एक रैंडम बंदे से जो कह रहा था कि वो एरिया 51 में काम करता था। कॉल में वो बंदा बहुत फ्रैंटिक था और वो बोलने के दौरान रो रहा था तो बहुत कुछ हो रहा था इस कॉल में। He started saying how they had contacted aliens, but they weren't actually aliens, they were extra dimensional beings and that they had infiltrated a lot of the military establishment. वो disasters के बारे में बात करने लगा जब उनकी लाइन कट गई। They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. जब मैं कॉल सुन रही थी मुझे लग रहा था कि ये obviously नकली है, मगर लाइन क्यों कट हुई थी अगर वो कॉल नकली थी? Surely the person would have just continued on with the hoax had it been fake. What do you guys think? अब हमारे 8 नंबर पे है Quackers। 60s और 80s और कोल्ड वॉर के दौरान बहुत मुल्कों के सबमरीन्स को अजीब सिग्नल या आवाज पिकअप करने लगे। रशियंस पहले थे इस आवाज को सुनने में और उनके पास बहुत सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स थे, मगर उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। उनको पता चला कि ये सिग्नल एक मशीन या जानवर से आ रही थी जो सबमरीन्स को सर्कल कर रही थी एक ऐसी स्पीड पे जो इंसान ने अभी तक इन्वेंट नहीं की थी। वो स्पीड 200 किलोमीटर इन आवर। और नाम से आप गेस कर सकते थे कि रशियंस ये चीजें को क्वैकर्स बुलाने लगे। आवाज कोई एलियन सिग्नल जैसे लगती है। 7 पे है कत्ल का कॉल। ये वाला बहुत मेस्ड अप है। मैंने रात को ये सुना और असल में मैंने खिड़कियों और दरवाजों को चेक किया। I don't trust anyone and neither should you। मगर खैर, ये कहानी रूथ प्राइस एक बुजुर्ग औरत के बारे में है और वो अकेली रहती थी। रूथ अक्सर पुलिस को कॉल करती थी और उनको बताती थी कि उसको लग रहा था कि कोई उसको देख रहा है। Oh, there's some guy been checking the place out. मगर उसने इतनी बार कॉल किया कि पुलिस उसको डिसमिस करने लगे क्योंकि उसको कुछ नहीं हो रहा था और उनको लगा कि रूथ बस थोड़ी सी पैरानोइड थी। So I live alone and I'm an old lady. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. But one day the call was different. Have a listen. मैंने ये रिकॉर्डिंग अब 4 बार सुनी है और हर टाइम मुझे गूस बम्प्स आ गए थे। लोग मानते हैं कि रूथ का कत्ल इस कॉल पे हुआ था और दूसरे लोग मानते हैं कि ये कॉल नकली थी। Coming in at number 6 is the death song. Already this one is messed up and I haven't even said anything about it yet. Go figure.
कहानी एक म्यूजिशियन के बारे में है जिसका मिशन ये था, उसने आवाजें ढूंढनी थी या बनानी थी जो प्योर इविल, डेथ और सफरिंग की आवाजें थी, और उसका मिशन सक्सेसफुल था क्योंकि इसने ये बनाया। मगर ये बनाने के एक हफ्ता बाद उसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि ये गाने ने उसको पागल बना दिया था। How can a song drive you to kill yourself? I have no idea, but you never know what people are going through. Some people say the song was created by a man named David Byrne, who's still alive, but where's the fun in that story anyway? अब हमारे 5 नंबर पे है जिंदगी की आखिरी कॉल। मैं इतनी ड्रामा वाले टाइटल्स बनाती हूँ कि मुझे हंसी आ जाती है, मगर ये कहानी हंसने वाली नहीं है। More like the complete opposite. 9/11 के दौरान केविन कॉस्ग्रोव एक बिजनेसमैन था जो साउथ टावर के अफेक्टेड जोन के ऊपर फ्लोर पे स्टक हुआ था। वो 105 फ्लोर पे चला गया और उसने कॉलें करने लगी। उसने खानदान को फोन किया, भाई को किया, दोस्तों को फोन किया और आखिरी कॉल उसने पुलिस को की। I just wanted to preface this before you hear the recording of the phone call that it is very disturbing, so proceed with caution. It's black, it's iron. We're young men, we're not ready to die. कॉल के दौरान साउथ टावर कोलैप्स होने लगती है और केविन चीखने लगता है, और फिर I'm sure you can guess what happened after that. We're looking at financial center. Between us, 2 broken windows. Oh, God! Char pe hai the chimpanzee 911 call. This one is truly brutal in every way you wish it wasn't, so here we go. 2009 में पुलिस को एक कॉल मिली सैंड्रा हेरोल्ड से। सैंड्रा के पास एक चिंपैंजी था जिसका नाम ट्रेविस था, और 14 सालों में ट्रेविस ने कभी इंसानों पे हमला नहीं किया था। वो बहुत समझदार और सोशल चिंपैंजी था। ट्रेविस, you a smart one. मगर एक दिन सैंड्रा की कोई दोस्त उसके घर आ गई और उसने ट्रेविस का पसंदीदा खिलौना पकड़ा हुआ था, और जब ट्रेविस ने ये देखा वो बिल्कुल पागल हो गया था। The chip killed my friend. What's the problem with your friend? I need to know. The police come with a gun. He ripped her face off. उसने उसके हाथ जिस्म से रिप ऑफ कर दिए थे, और उसने उसके आंखें और चेहरा और जॉ भी रिप ऑफ कर दिया था। ये सब हो रहा था जब सैंड्रा ने ये ड्रोनी 911 कॉल की। Who's killing your friend? My chimpanzee. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. I know. It's very disturbing. Coming in at number 3 is The Night Stalker. Richard Ramirez एक अमेरिकन सीरियल किलर, चोर और रेपिस्ट था, और वो 1984 और 1985 के दौरान एक्टिव था। वो अपने विक्टिम्स को कॉल करता था उनके घर पे और उनको बताता था कि वो उसके अगले विक्टिम्स थे और वो मरने वाले थे। Imagine getting a warning or threat about your own death from the person who wants to kill you. मैं एकदम घर छोड़ती, I don't even care. Let's roll the clip. वो I'll kill you बोल रहा है। Imagine मुझे सीन सेट करने दो creepy music के साथ। Imagine आप बहुत लेट रात को उठे हुए हो और आपको ये कॉल मिलती है कि आप मरने वाले हो। फट जाती या नहीं? In the end, he was sentenced to 13 death sentences and was dubbed cruel, callous and vicious beyond any human understanding. Now that's a person I definitely don't want to call from. अब दो पहर, don't talk, just listen. These were the 4 words that started every one of Paul Michael Stefani's calls to the police after he had murdered people. Paul एक अमेरिकन सीरियल किलर था और लोग उसको वीपी वॉइस किलर बुलाते थे क्योंकि कत्ल करने के बाद वो पुलिस को फोन करता था और कत्लों के बारे में बोलता था एक ऊंची हिस्टेरिक आवाज में। उसने 3 लड़कियों का कत्ल किया था मिनियापोलिस में, और जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh my God. कभी वो हिस्टेरिकली बात करता था, कभी वो विस्पर करता था, और कभी वो रो रहा होता था और पुलिस को बता रहा होता था। और आखिरी 1 नंबर पे है The WKCR hijacking। ये शायद मेरी पिक थी सबसे जॉनी आवाज की इस लिस्ट में। 1995 में किसी ने WKCR की न्यूयॉर्क रेडियो स्टेशन को हाईजैक किया था और शुरू में वॉर्प्ड गाना प्ले हो रहा था, और फिर कोई और अजीब आवाजें आ रही थी, और फिर एक औरत की आवाज आई थी जो
लोग के नाम पढ़ी थी जो 1980s में मरे थे। John Lennon, son of John Senior Mel, brother of Captain Chris, that the President December 21st, 1988, buried that. The recording really creeps me out. I feel like this is what I would hear in my head if I ever went crazy. It's just such a weird audio. दूसरी आवाज किसी औरत की सांस या moaning जैसे लगती है, मगर बहुत Johnny effect add करती है। कोई demon की आवाज लगती है, I swear. Just listen to the clip and you'll definitely agree. So, alright guys, that's it for today's video. I hope मैंने इस वीडियो के साथ entertain किया और hopefully उदास या बहुत डरा तो नहीं दिया। Comments में मुझे बताओ कि आपको कौन सी recording या sound सबसे Johnny लगी और क्यों। मेरी सबसे Johnny choice is कत्ल का call and don't talk just listen के कॉल थी, क्योंकि दोनों मुझे physically chills और goosebumps देती है। As always guys, मैं आपकी host हूँ एमन हसन और हम अगली दफा मिलते हैं। खुदा हाफिज।